film this video. I know इस वीडियो में तुम सोच रहे होगे ये sad वीडियो होना चाहिए, but why am I so happy? I am not. This is just how I act when I'm upset. I smile a lot when I'm upset because that is how I express my frustration. Today I'm going to be telling you on how I got played by an F-boy and how मैंने 17 साल तक अपनी first kiss बचा के रखी थी and how I lost it to literally the biggest douchebag that I have ever met. Like literally the biggest douche. Okay? Thank God I didn't do the deed with him because I would have regretted it for the rest of my life. But Hanji, let me take you through the story and how it all went down. Okay? So what do we call him? I cannot reveal his real name. We are going to call him Rohan. So now we're going to talk about Rohan. His real name is not Rohan. His real name starts from तो मैं बताती हूँ how did I meet this guy. तो पहले तो जैसे Instagram में before when I didn't have any followers, तो I think I had like 1 or 2K followers. That was the time when I followed him because mutual से पहले I was very desperate for friends. तो I followed him and I think one day I replied to his story. तो मैंने एक दिन बस story पे reply किया बोलते हुए हाँ I prefer how I met your mother more than friends. That's how the conversation started. But this is long back. I didn't even meet this guy till then. He texted me फिर से and then he started talking to me like a normal friend. I consider him a normal friend of mine कि हाँ चलो mutual पे Instagram पे ऐसी बात होती है normal सा friend है अगर कभी मिले तो मिले. Then after that legit he begged me to meet him. He's like oh when will you meet, when will you meet, when will you meet, you call me your bestie because I legit call everyone my bestie because that's like how I am. I'm a nice person. I like to make friends. So I met him. इधर मेरे Starbucks पे मैं इधर ही सबसे मिलती मेरे Starbucks पे like my spot. फिर मैं इससे Starbucks में मिली and then I was like oh my god give me tea. तो फिर वो मुझे पूरा अपने लाइफ की कथा बताने लगा अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की उसकी एक्स गर्लफ्रेंड कितनी चुड़ैल है कुत्ती कमीनी है हरामी है. You know the one thing I found so weird about this guy उसकी हर लड़की को कुत्ती बोलता था legit. पर पता है मेरे को मेनली अच्छा लगा क्योंकि इसने मुझे बोला कि oh my god ये दिल्ली का है ये पंजाबी है and he was like I love North Indian food this that. We started hanging out okay for like a week or some shit. Now till this time I have no any like romantic expectations with him, but you know the day I met him we like this picture. What the weird thing I found was ना हाथ मेरे कमर पे रखा फोटो खींचने के लिए. तो I was like weird but I was like ठीक है कुछ लड़के होते हैं ऐसे टची विची. तो I was like ठीक है कोई गल नहीं. तो मैंने ना ये बात जेवी को बताई मेरा फ्रेंड है कि then जेवी legit predicted this entire thing. ये ऐसे ही करेगा ये ऐसे ही सब लड़के स्टार्ट करते हैं फिर आगे करेगा. तो I was like ऐसा कुछ नहीं हो रहा जेवी मेरे साथ. मैं बहुत स्मार्ट हूँ to get played by a boy like him. इसकी तरह फिर क्रिसमस आया. We went to जियो मॉल. ना मैं इसी कार में गई इसने मुझे एक स्टारबक्स कॉफी ला के दी. तो पहले तो मैं बहुत क्लियर रहती हूँ मैं कोई लड़के को अपने लिए कुछ पैसे शुरू देने नहीं देती हूँ. बहुत बार होता है कि एट टाइम्स ब्रेकअप होने के बाद लोग बोल देते हैं ये वो करते हैं तो इसको मैं कभी किसी को मेरे लिए पेशे नहीं करने देती हूँ. इट्स जस्ट समथिंग दैट आई डू नॉट लाइक. उन्होंने मेरे लिए कॉफी ले आई. I was like ठीक है चलो अभी भी फ्रेंड नहीं है हम दोनों. फिर then he started being like all nice and this and that lallo chappo. We talked and I used to talk to this man for hours. So I was like bro we only talk. So I'm sure he doesn't have any romantic anything with me. And after Christmas that's when he started getting really touchy and I was like ठीक है चलो अभी तक ये friendship में ठीक है. And then he started complimenting me lallo chappo chute आप जो करते हैं. And I legit told him my worst fear is that if I kiss a guy and if I make him my boyfriend he will get bored of me and leave me. Like that is my worst fear. तो मैंने उसको सब बताया मेरी बातें. And then he used to be like oh why do you think like that, why would anyone do that to you, blah blah. पता है मुझ चपेट चढ़ूं तेरे को मैं. Then he used to go through my DMs being all like so many people talk to you this that. I was like नहीं मैं ज़्यादा लोगों को भाव नहीं देती हूँ. मैं बहुत हार्डली लोगों से बात करती हूँ. ये ऐसे ही मुझे अपने फोन में दिखा था. I don't talk to anyone. See the only person I talk to is you. मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि चलो जनरल का ऑप्शन होगा इसने जनरल में डाल दिया होगा. मैं ये सोची नहीं. मैं पागल क्योंकि मैं लेजिट एक होपलेस रोमांटिक हूँ और मैं सब में बस मेरा मानना है कि अरे मेरे को मेरा बॉलीवुड वाला लव मिलने वाला है बस मेरा फर्स्ट होगा तो अच्छा ही हो. हाँ जी मैं इसके फोन पे गई तो फिर एक कोई ये लड़की थी जिससे ही डॉक्टर. I was like oh who is she then. तो then he's like oh no I don't like her she's so ugly. But उसके लिप्स देखा है कैसे उसका बॉडी कैसा है. मैं उससे बस बात करता हूँ क्योंकि वो डिप्रेस्ड है. फिर इसकी कौन सी एक और कोई फ्रेंड ठीक है ऐसे 2-3 लड़कियाँ थी. And then he was like no she I have hooked up with her once. फिर then he's like you are not like any of them, you are not problematic, you are not dramatic, you are not bitchy. फिर next day he started that we should meet. So I was like yeah I will meet him because I was like ये अच्छा लग रहा है मुझे बंदा. और I thought कि अरे बेचारा अच्छा है इसने क्या किया है बेचारे के साथ सबने दुख दिया है. I think I went out like
7 p.m. and then I came home at 12 a.m. No, we didn't do anything physical till that day. The thing I found odd with him was he hated being spotted with me in like public. He was like, no, we shouldn't go from there. There are people. We shouldn't go from there. There are people. Then I literally, क्योंकि मेरा कैसा है, मैं straight up बंदे से पूछ देती हूँ, भाई देखते को embarrassed feel हो रहा है तो तुम मुझे बता दे. And then he's like, no, not like that at all. I found it like very awkward कि भाई ये बंदा मेरे पे इतना simp करता है one moment in private and in front of his friend he acts like as if I fucking don't exist. पता नहीं मैं क्या डम आइडियोलॉजी में थी कि होगा माइंड में, सब एक्सट्रोवर्ट थोड़ी होते हैं, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, ये होता है वो. फकिंग मैं एक डाइट कोक ला देता था और मैं डाइट कोक में खुशराती थी. I'm like, oh my god, he remembers that I drink diet coke. So I met him, blah blah. तो बीच में ना क्या हुआ, एक दिन ऐसा मुझे बिल्कुल ऐसा MIA हो गया. बोलते हैं he's so busy with his product, I got, and then he's like, you don't have any work, you are not busy, and I'm like, bro, मेरा काम है, तेरा काम भी काम है. Then he's like, my dream is gonna make me actual money. And that all really pissed me off. And then that day, रात में इसका मुझे phone आया. Now the sus thing about him was, he legit only called me at like 2 a.m. to 3 a.m. तो मैंने उससे पूछा कि भाई तू मुझे 2 से 3 बजे क्यों फोन करता है, दिन भर तू इतना बिजी रहता है. तो then he's like, oh no, because I like talking to you for so long. ऐसे मम्मा आ जाती है. I'm like, ठीक है चलो, माँ बाप का नाम ला रहा है. न्यू ईयर के दिन he texted me that he wanted to meet me at 7 p.m. I was like, yeah, cool, चलो कोई गल नहीं. Then he postponed the time to 7 से to 12:30 p.m. And then he's telling me he's spending his New Year's with his parents, which was a fucking lie. Because उससे एक दिन पहले भाई साहब ने बोला that his building people are having this building party. ये अपनी उस party में था with his ex-girlfriend and all of the fucking people. So I went and I hung out with JV at his house and I told him and you know JV is literally telling me, bro, he is playing you. US के दिन मिल रहा है, उससे पहले ऐसे मिलता है, दूसरी लड़कियों के रील डालता है. ये तो मैं बताना ही भूल गई. बेस्ट पार्ट कि हाँ ये दूसरी लड़कियों के रील डालता है, फिर मुझे बहाना देता है कि नो आई डोंट टॉक टू एनीवन. लेजिटली लड़कियों को पता है कमेंट्स में कैसे रिप्लाई करता है, आई लव यू, आई मिस यू, रिप्लाई टू मी ना. अ लॉट ऑफ दीज आर रेड फ्लैग्स दैट आई कैन लिटरली सी. बट मैंने बोला यू नो व्हाट, आई एम जस्ट गोना वेयर माय ग्लासेस, आई एम गोना प्रिटेंड दैट आई एम ब्लाइंड और मैं जा रही हूँ उस लड़के से फिर से मिलने. तो हाँ लेजिट मैं 12:15 में आदमी से मिलने गई. न्यू ईयर था, मेरी माँ ने मुझे डेडलाइन नहीं दी थी. आई वाज अलाउड टू रोम. बिफोर न्यू ईयर वाला डे वी किस्ड, बट लाइक वी डिडंट किस, वी जस्ट लाइक पैक्ड. मैं इतना क्यों बता रही हूँ, मुझे इतनी शर्म आ रही है सब बताने में. हाँ फिर नेक्स्ट डे आ गई एंड देन वी लाइक किस्ड. वी किस्ड एंड शेड एंड ब्ला ब्लू बकवास वो सब जो होता है. फिर न्यू ईयर के दिन मेरा एक फ्रेंड मुझे फोन कर रहा था. He's like, oh, why would you meet him? You meet with so many guys, you talk with so many guys. That he called me a hoe. And I was like, I'm not a hoe. How are you even calling me a hoe? I have never even kissed someone other than you. I'm like, तेरे को बोलने जाओ तो भाई तूने तो क्या क्या किया हुआ है, तेरे को तो मैं क्या क्या बोल सकती हूँ. बंदे में इतना भी नहीं है कि एक बार मेरे को सॉरी बोल देता. ठीक है, ये तक नहीं है इसमें. New Year's happened, then that day only he took me to his friend's house. चिल कर रही थी मैं. Where this girl asked me, are you guys dating? Then he asked me, are we dating? So I was like, you tell me. Because भाई मेरे side से तो काफी clear है. So then he ignored the question completely and he went with his friend. I was like, okay, weird. New Year's हुआ, फिर next day he just disappeared. And you know, it was very stressful for me. क्योंकि भाई ये बंदा मेरा first, ठीक है. So I was obviously emotionally attached to this person. Now people might think, oh my god, first kiss है, first make out. इसमें क्या इतना बड़ी बात हो गई. मेरा अगर होता ना इसी intention से, अगर मुझे करना होता तो मैं कब का कर ली होती. So I cannot tell this to anyone now because everyone around me said that this will happen to me. So stressed, I'm feeling so this. And then he had the balls to text me, oh my god, this is eating my hair. I'm like, bitch, who the fuck is. After 5 days he texted me that we should meet. So because yes, I was missing him, because yes, I literally liked this guy. I went to meet him. He's like, पहले तो इससे ये था कि इसको हमेशा रात में मिलना रहता है. इसकी जो timings थे, it was all just a red. And that day, I kid you not, I saw this girl in his DMs. इसको बार-बार शैगी से मैसेज आ रहा है. फिर रात के 10 बजे, legit, when I was with him, I was legit kissing him, and then he's like, oh, I have to go. Suddenly इसके phone में कुछ मैसेज आया, and apparently वो इसको रात के 10 बजे इसकी क्लास हो रही थी कॉलेज की. अभी कौन से कॉलेज की क्लास होती है रात के 10 बजे. He didn't even have the fucking in him to legit like drop me till my house, and he legit lives 2 minutes away from my house. तो मैं रिक्शा में जा रही थी, ठीक है. And then he's like, I will call you, and I was like,
That was the moment I fucking knew what an asshole he was. The last time that I met him, and that was literally the last time that I met him, I asked him that what are we? And then he's like, we just started, we just met 3 weeks back. I'm like, okay, but you have done everything with me. उसमें तो तेरे को कुछ stop नहीं होना रहता है, उसमें तो तेरे को आगे बढ़ना है. Then he's like, no, I don't mean it like that. You are so different from all the other girls. I just need some time. Well, I'm like, okay. कोई नहीं. मेरे को क्या पता था ये मुझे जाके next day ghost करने वाला है. Literally ये बंदे ने ऐसा फील कराया कि कोई कचरा हूँ जिसने ये उठाया और इसको अच्छा नहीं लगा तो इसे फेंक दिया. It literally felt like that. And this is so frustrating because as I make this video, I am literally feeding into his bekar some ego. And then after a few days, क्या हुआ था, मैंने अपने क्लोज फ्रेंड में डाला था, जो मेरा एक फ्रेंड था जो मुझे सपोर्ट कर रहा था, तो मैंने भी डाला था ओ बेस्टी ऑलवेज सपोर्टिंग मी. एंड देन आफ्टर लेजिट गायब 10-15 दिन से बात नहीं कर रहा. देन वन डे ही टेक्स्ट मी तू हो है. फिर इसने उसी दिन जिस दिन मैंने ये डाला था, मैंने इसकी स्टोरी चेक नहीं करी थी क्योंकि मैं किससे इरिटेट हो जाती हूँ, मैं उसको म्यूट और स्टोरी पोस्ट म्यूट कर देती हूँ बिकॉज आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड. दैट डे क्योंकि इसने मेरे से बात करी, आई चेक्ड हिज स्टोरी. He's posting this reel of this chick that apparently he doesn't like at all. फिर ये बंदा उस दिन क्योंकि fucking ये बहुत एक stupid आदमी है, इसने मुझे अपने close friend में रखा हुआ था. And then he posts a fucking picture of kissing her on his close friend. I'm like, what the fuck? And that day that chick posts the same उसी location से जिधर मैं जाती थी उधर से photo. Fuck, Alexa, play Deja Vu by Olivia O Brien. And then I was like, you are calling me ho, what are you? I legit texted him that. And then he's like, बस timing थोड़ी गलत हो गई. मेरे को as a constellation price use किया गया था. Like I saw it coming. I was like, of course. So then he hooked up with her. Straight up. तो हाँ जी. Then. मैं तो बात बताना ही भूल गई. Best part. फिर ये उस दिन उसकी रील मुझे रैंडमली भेजता है, ठीक है, मिडिल ऑफ नोवेयर, इसकी एक फ्रेंड की. तो ये मुझे इसकी रील भेजता है, बोलते हैं लुक. तो मैंने देखा तो उसने लेंस पहनी हुई थी, तो मैंने इसको पूछा शी हैज ब्लू आईज. तो मुझे लिखता है इफ शी हैड ब्लू आईज डू यू थिंक आई वुड हैव लेफ्ट हर. सो उधर इसकी झूठ पकड़ा गया. फिर इसने तुरंत वो मैसेज अनसेंड कर दिया. अभी ये कल परसों की बात है. तो मेरे को पता चला कि दैट ही इज हुकिंग अप विद दिस चिक अगेन एंड दैट ही इज डेटिंग हर. लाइक फक. I'm like, really? And उसके बाद मुझे पता चला after some time that whenever he told me he was busy, he was legit getting help from bringing every other girl. It was fucking melting, hooking up with them, doing God knows what with them. She made an entire story time about her situationship because this guy wasn't even dating her, so he didn't even like cheat practically, but he did. Oh, I don't know. And ऐसे टाइप के लड़के आते हैं लाइफ में और वो आपको एक ऐसा ट्रस्ट इश्यू दे के जाते हैं माइंड में कि आप कोई अच्छा लड़का भी आएगा ना आपके लाइफ में, आप उसको ट्रस्ट नहीं कर पाते हो. जस्ट वांट यू ऑल टू नो, सी द रेड फ्लैग्स जो मैं नहीं देख पाई, ठीक है, बिकॉज आई डोंट वांट यू ऑल टू गेट योर हार्ट ब्रोकन. इट इज व्हाट इट इज, लाइफ इज हार्ड. इससे मैंने एक चीज सीखा, आई एम नेवर बेगिंग एनीवन टू कम इन माय लाइफ. यू वांट टू स्टे यू कैन स्टे. नहीं रहना भाई तू निकल, मेरे को तेरी जरूरत नहीं है. आई नो ही वाजंट माय बॉयफ्रेंड, but he made me fall for him and then he did that to me and we never officially called it off because he went MIA and he started acting like nothing happened. So I also started acting like nothing happened because I'm not going to feed into your ego. Okay, bye.